Guys, welcome back to the Lion. There is one announcement. This is our Telegram channel at the rate the Lion, THELAWION. Please join for more updates. So we are dealing with the first major topic from the family law, that is Hindu joint family system, out of which we are done with the first topic, that is Mitakshara and Dayabhaga, two schools of Hinduism. So in last three lectures and videos we are done with the Mitakshara and Dayabhaga. Today we are about to start a new topic and a new concept, that is co-parsonary. So when we consider the unwritten Hindu law, there are two concepts which are very much important. First is joint Hindu family and second is co-parsonary. These two concepts are also important in written Hindu law, but before that, before the Britishers came to India, there also these two things were highly important. So let's get started with the topic of the day, that is Hindu joint family and co-parsonary. So who are the members of joint Hindu family? Okay, we are done with the joint Hindu family and its three aspects. Now who are the members of joint Hindu family? फर्स्ट टाइप ऑफ मेंबर जो एंटायर फैमिली है, इसमें फर्स्ट टाइप का मेंबर विल बी कॉल्ड एज को पार्सनर्स एंड दे विल ओनली बी मेल मेंबर्स, एंड देयर विल बी सेकेंड टाइप ऑफ मेंबर विल बी कॉल्ड एज members who has to be maintained. Okay, so in co-parsoners up to 4 degree of common ancestors will be considered as co-parsoner. ठीक है, हमने देखा कि जॉइंट हिंदू फैमिली में कौन कौन आता है, तो सब लोग आते हैं, सब मिला के जॉइंट हिंदू फैमिली बनती है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट शेयरिंग अ प्रॉपर्टी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल कंसिडर ओनली को-पार्सनर्स. ओके, सो को-पार्सनर कौन है? उत्तराधिकारी ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है, तो उत्तराधिकारी कौन कौन बनेंगे? ओनली 4 डिग्री ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स. तो ये क्या है अगले स्लाइड में देखेंगे. सो जो प्रॉपर्टी होल्डर है, अभी जो प्रॉपर्टी होल्डर है वो है बाबूजी. ठीक है, उनसे आगे 3 लिनिएज तक विल बी कंसिडर्ड एज अ को-पार्सनर्स. ठीक है, इसका अर्थ ये है कि अभी बाबूजी के पास प्रॉपर्टी है, तो उससे आगे 3 लिनिएज, मतलब बाबूजी, उनके सन, उनके ग्रैंडसन और उनके ग्रेट ग्रैंडसन, ये 4 पीढ़ी मिला के क्या बनेगा? को-पार्सनर बनेगा. ठीक है, एंड टू बी मेंटेन्ड में कौन कौन आएगा? ये जो लड़के हैं उनकी वाइफ, बाबूजी की खुद की वाइफ है ना, सो एंड उनकी बेटी या लड़की, इट विल बी अ member to be maintained. But this position is before 2005 amendment. What happened in 2005? Hindu Succession Act has been amended, which allowed a daughter to be a co-parsoner. So what will be the scenario after 2005? There will be co-parsoners, but you can observe the change. There are not only male members. Okay, now a male as well as a female can be a co-parsoner. अगेन सेकेंड टाइप, मेंबर्स टू बी मेंटेन्ड है ना, तो अपने बाबूजी और को-पार्सनर्स में वन मोर पर्सन विल बी एडेड, दैट इज डॉटर ऑफ बाबूजी. सो फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स व्हेन वी कंसिडर को-पार्सनर्स, सो डॉटर्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज अ को-पार्सनर्स, एंड टू बी मेंटेन्ड में अब कौन आएगा? ओनली द डॉटर इन लॉज. So this is the scenario after 2005 amendment. So ये 2005 amendment है क्या? चलो एक क्विक में देखते हैं. It is an amendment to the Hindu Succession Act 1956, and it came into force on 9 September 2005. So that is 9/9/2005. And what are the provisions? You can read. The daughter of a co-parsoner also becomes by birth a co-parsoner. So अभी तक मिताक्षरा स्कूल में हम जो बोल रहे थे कि by birth a person becomes a co-parsonary. So अभी from 2005 onwards a daughter by birth becomes a co-parsonary. तो ये सभी इसमें लिखा है, please go through it. So just remember, it's very simple. From 2005 onwards a daughter is also a co-parsoner into the family. So this is position after 2005. चलो,
So how Hindu coparcenary forms, how the formation takes place. We already know when we consider coparcenary, we only consider up to 4 lineage. That means property holder से लेके आगे 3 तक. So there is a property holder, कौन है? बाबूजी, we know. उनके sons and daughters will be the second lineage. Okay, so they will be equal owner or co-owner of the property. So right now हिंदू का कोपार्सनरी कौन कौन है? प्रॉपर्टी होल्डर, दैट मीन्स बाबूजी और उनके 3 लड़के और 1 लड़की. ओके, दीज 5 पीपल राइट नाउ आर द कोपार्सनर्स. ठीक है, बट व्हाट वी हैव सीन दैट इट सेज इट इंक्रीजेस अप टू 4 लीनिएज. ओके, सो कंसिडर अगर बाबूजी के जो बेटे हैं उनको बेटे हो गए, सो हाउ द ट्री विल लुक, हाउ द कोपार्सनरीज विल बी. प्रॉपर्टी होल्डर अभी बाबूजी है, सो दैट विल बी द फर्स्ट लीनिएज. सेकंड sons and daughters, and the third will be grandsons, and the fourth will be great grandsons. Okay, so whenever we'll be considering coparcenary, these 4 can only claim a property as a coparcener by birth. ठीक है, so this is how a Hindu coparcenary formation takes place. So just give a quick recap. What is joint Hindu family and what is the difference between joint Hindu family and coparcenary. So joint Hindu family, it is a wider term than coparcenary, क्योंकि we know joint Hindu family में सब तरह के लोग आते हैं, है ना, from unlimited lineage to unlimited age groups. ठीक है, but that is not the case with the coparcenary. So यहाँ पे unlimited lineage है और it includes males plus female, है ना. In coparcenary it is limited up to only 4 degrees. We have seen the 4 degrees, and up to 2005 there was a condition or there was a concept under Mitakshara that only male members can be a coparcenary, but post 2005 after the amendment to the Hindu law, male as well as female can be a coparcener. So that's it for today. Thank you so much guys. See you soon.